वेलकम बैक। सो अब हम कर रहे हैं आज ऑडिटिंग। ओके, सो दिस इज ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो ये लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं हमारे, राइट। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर 3 और दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर CMA इंटरमीडिएट जून 2022 अटेम्प्ट। ओके, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं आगे। We had completed all these things। ठीक है, 2 लेक्चर्स में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था, राइट, कि कैसे इवॉल्व हुआ एंड ऑल दैट वी हैड कंप्लीटेड। सो डेफिनेशंस वगैरह देखे थे हमने। सो नाउ आई विल टेक यू वेयर वी हैड एंडेड। ओके, सो वी हैड एंडेड हियर विद द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, जितने भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन है उसको अच्छे से ध्यान रखना है हमको। ओके, सो जस्ट रिमेंबर व्हाट एवर पॉइंट वाइज क्वेश्चन कम्स, उसके 5-6 पॉइंट माइंड में रख लेना है, पूरा डिटेल में नहीं, कि इतना याद रखिए कि आप लिख सके एक सेंटेंस उसका। ओके, ठीक है। सो ऑल पॉइंट वाइज क्वेश्चंस जो है वो बहुत काम आएंगे, राइट। तो चलिए तब यहाँ से हम चालू करते हैं। नेचर ऑफ ऑडिटिंग हमको कंटिन्यू करना है यहाँ से। ओके, तो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि हमारा जो है इंडिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। ओके, वी हैव एन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। वैसे ही इंटरनेशनली देयर इज एन इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ओके, सो ये बोर्ड जो है ये सारी जो चीजें हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड जारी करते रहता है। ओके, सो दिस बोर्ड IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, time to time it gives pronouncements. Okay, so even your international accounting standards are also released by this board. Okay, and our accounting standards on auditing is released by AASB. Okay, so auditing and assurance standards board. ठीक है, sorry ASB नहीं, ASB जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है। दैट इज ICAI का बोर्ड है वो ASB, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अब ASB में मैंने एक और A लगा दिया तो हो जाता है AASB अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ओके, मैं लिख के बता देता हूँ। AASB is auditing and assurance. AA is auditing and assurance standards board। ठीक है, तो इंटरनेशनल ये इंडिया का है। ठीक है, सिर्फ ASB बोल दूंगा तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। Okay, so ASB will issue what? Accounting standards। Okay, so सारे AS has been issued by ASB। जो IND AS जो भी आ रहे हैं that has been issued by ASB। ठीक है, वो भी ASB इशू करता है ना। AASB issues what? SAs, standards on auditing। so AASB issues standards on auditing, SA बोलते हैं उसको। ओके, SA1 SA2। ओके, सो ये आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसके लगभग हमारे 44 स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपको एज सच पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट 44 स्टैंडर्ड्स। आई जस्ट शो यू, दीज आर योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, इस तरह से होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर एन ऑडिट फर्म, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट फर्म। यहाँ से स्टार्ट होता है। दीज आर योर मेन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, here onwards if you see, so time to time I'll bring you to this list और धीरे धीरे जो important वाले हैं that we will learn। okay, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, so you don't have to separately sit and learn। ठीक है, okay, so these things ये आपका जो है पूरा नीचे तक और जाता है। it will end here, यहाँ पे end होता है। okay, so in all आप if you see the count, ये सब आपका एक लाइन में है ना। 1 minute, yes, so if I want to see the count, ठीक है, थोड़ी काउंट, इट इज अबाउट 44। ठीक, 44 है करीब ये एसेस। ओके, चलो वापस आते हैं हम लोग।
राइट। तो ये चलो ये कुछ बेसिक्स हो गए, ये AASB हो गया, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ASB इज दिस, ठीक है। और जैसे ASB है, ठीक है, ASB का इंटरनेशनल बॉडी इज IASB, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सो IASB क्या इशू करता है? इट इश्यूज IAS। ASB क्या इशू करता है? AS। और ऑफ लेट नाउ इट हैज स्टार्टेड इशूइंग IND AS, ठीक है। ये IND AS is very much like AS, काफी सिमिलरिटी है, बट दिस इज पर्टिकुलरली टेलर मेड फॉर इंडियन कंडीशंस, ठीक है। सो ओनली AS जो हम बोलेंगे वो थोड़े जनरलाइज्ड है, बट इन AS स्पेसिफिकली फॉर इंडियन, ओके। सो बस वही डिफरेंस है। एंड तो ये हो गया आपका, ये ASB जो है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, दिस इश्यूज SA, ठीक है। सब ये AASB का इंटरनेशनल बॉडी क्या है? जैसे ASB का, जब IASB, इसका है IAASB, ठीक है, IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑडिटिंग के साथ हमेशा अश्योरेंस वर्ड यूज होता है ना। ऑडिटिंग के साथ हमेशा क्या वर्ड यूज होता है? अश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग हमको अश्योर करता है कि नहीं सब ठीक है करके, अश्योर है ना। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, okay, so the doctor says that okay, I am guaranteeing you everything will be fine. That is called an assurance. So auditing is assuring the shareholders and other stakeholders that everything is fine. Okay, that's why with auditing always assurance word is used. Okay, so चलिए ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत right. चलो nature of auditing. Okay, this is now we are talking about nature of auditing. So ये IAASB के पीछे हम चले गए थे. Okay, what is IASB? Okay, so what IASB says is, ठीक है, कि it talks about the objective of audit of financial statements. ठीक है, बोल रहा है objective of audit of financial statements क्या है? Okay, so objective of audit of financial statement is कि after doing audit, auditor should be able to see, should be able to say, ठीक है, क्या बोलना चाहिए? Should be able to say that the financial statements are prepared in all material respects. ठीक है, auditing is done, transactions जो several होते हैं, right? So you cannot 100% say that I have seen each and every transaction, right? So that's why we say that material and all important things, all important areas की बात हो रही है, okay? That we are that is what is said as material, that we're talking about all important things, okay? So objective of audit of financial statement, what is the objective? That auditor should be able to certify in the end that financial statements have been prepared in all material respects in accordance with identified financial reporting framework. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है, ओके। इसका क्या मतलब ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू ऑलरेडी नो इज योर अपना जो मेन है, दैट इज योर P&L account and balance sheet, okay, trading in P&L account and balance sheet, that is the main. Okay, in most cases cash flow is also part of your financial statements, okay. So these financial statements, ये जो डेटा बता रहा है, it is all fine, ये बोल रहा है। आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है, सी क्या आप जो अगर इंडिया में आप अकाउंट्स बनाते हो, ओके, इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट्स इन इंडिया, so what are the things you need? Okay, one will be you have to follow accounting standards, AS, Ind AS, okay, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके, दिस इज द फ्रेमवर्क। तो ये तो रूल हो गया, तो इसको तो आप टाल सकते ही नहीं। सो व्हाट इज whatever AS, Ind AS has said, that you have to follow, okay. And then there are certain things which will not be mentioned in AS, in Ind AS, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर की चीजें होंगी, things which are not I would say not really important or something like that, okay. These things will cover all the major important areas, but there can be some areas which are left out, right? For that, what you will do,
will follow Indian convention. What is the convention which is followed in Indian accounts? ठीक है, तो इस कन्वेंशन का और एक नाम है, we call it as GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. ओके, कभी कभी इसको भी बोलते हैं, इसको ऐसा भी यूज होता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, we call it Generally Accepted Auditing Principles भी बोला जाता है. ओके, when you are talking in relation to auditing. So जो ये है, तो ये होता है, तो बेसिकली ये, और इसके अलावा जो है इंडिया के लॉ होंगे, लॉज एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर, दिस हैज टू बी फॉलोड. तो ये सब मिला के जो है, दिस बिकम्स योर इंडियन फाइनेंशियल फ्रेमवर्क. बिकॉज इंडिया में आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, ओके, इंडिया में जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, द अकाउंट्स व्हिच यू हैव मेड इन इंडिया, दैट शुड बी इन कंफॉर्मेंस विद ऑल थ्री ऑफ दिस. ठीक है, सो यहाँ वहां पे ये बात बोल रहा है, okay? With identified financial reporting framework means all those things which I just said. Okay, so first point में हमने क्या बस छोटी सी चीज बोली, objective of audit of financial statements is to enable the auditor, ठीक है, an auditor should be able to say that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the identified financial reporting framework. That is your GAAP, accounting standards and the laws. Okay, so क्या करता है, क्या what all does the auditor examines? One is internal evidence. ठीक है, internal evidence means internal to the enterprise. So what all उसमें क्या रहेंगे, जो जो transactions are recorded, ठीक है, उसके first of all there will be vouchers. Vouchers क्या है, कुछ और नहीं, it is receipts. ठीक है, आपने कहीं कुछ कंपनी के लिए you have paid some bill, okay, then you will get that receipt of the bill. That is nothing but a voucher. Okay, so any bill which is which is saying that yeah, this amount has been paid, it is giving you the proof, that document is called voucher. It can be for payment, it can be for receipts. ठीक है, उसको vouchers बोलते हैं, right? So vouchers को it is nothing but a receipt. Receipt मिलता है ना, bill. Okay, that is called a voucher. तो वाउचर्स को देख के हर एक ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए, राइट? सो बेस्ड ऑन वाउचर्स यू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू विल समराइज इट एंड देन यू विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सो इंटरनल एविडेंस जो कभी भी इन तीनों के बीच में मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट इंटरनल एविडेंस अमंग दिस. ठीक है, so records, vouchers and books of accounts. ठीक है, इसको he will examine. ठीक है, अब एक चीज है, ये भी है, he will also check the internal control system. Okay, what is internal control system? Now see, I had shown you in the previous lecture also. ठीक है, so internal control is something, the way your system is set. ठीक है, way your system is set, it is like that. Suppose one payment is happening, so here there is a person A, ठीक है, who is receiving the payment for the organization. Okay, from this it goes to person B. Okay, from here it goes to person C. अलग अलग चीजों के लिए एक में ये कलेक्ट करेगा पेमेंट, he'll collect it. Okay, then collect करने के बाद payment will move to some other department. Payment will move here, and the receipt which is getting, counterfoil which is doing, it will go to this person. Okay, so from this person, then for this person he will separately correct something, some part from person A, some part from this. ठीक है, so इस तरह से transactions move होते हैं. और गुड इंटरनल कंट्रोल मींस क्या होना चाहिए कि दिस पर्सन, आपका जो ए है, इसको ये बी के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए. ओके, और इसको ये सी के साथ भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए. किसी के भी साथ किसी का मे बी टू सम एक्सटेंट हो चलेगा, बट ओवरऑल जब आप पूरे ट्रांजैक्शन को देखते हो, whenever you're talking about the entire transaction, one transaction's entire history,
if this person has done some mistake, okay, if this person has done some mistake, it will be physically impossible for him to go to each of them and correct it. So somewhere that defect will be identified. Okay, so this is called a good internal control system. Okay, so auditor will क्या देखेगा सबसे first, he'll just see whether the internal control system is good. And if the control system is good, then he knows that normally, on a normal basis, he can say the quality of financial statement will be good. Because here it is not possible that if one person makes a mistake, he cannot go to the entire trail and correct it himself. It's not possible. So that is said to be a good internal control. ठीक है, चलिए तो ये हो गया, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम ताकि आपको ये हो जाए कि you understand it as well. ठीक है, your course is not very large. Okay, course is quite small for you. ठीक है, total of 150 PDF pages from your study material. So based on our notes, let's say maximum we are talking about 100 pages. Okay, 110 pages. That's all. ओके, सो और एक चीज बोलता हूँ कि देखिए इसमें आप ट्राई कीजिए दैट यू यूज ओनली CMA मटेरियल. ओके, आई कीप टेलिंग दैट you have got lots of notes and all floating around, which is for ऐसा आता है CA CS CMA. ओके, don't use this. इसके पीछे मत जाइए, specifically go for CMA because एक reason simple मैं बोलता हूँ, किसी का भी any good teacher you take, whichever you like, but go for those who is teaching for CMA separately. Okay, so mixed class को में मत जाइए कभी भी. Okay, don't go for mixed class because of CA it is a 100 mark subject. Okay, it's exhaustive, and here just now I told you it is 50 marks and your total PDF pages are 150 pages. Okay, then how can this notes hold good for you? ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ना है ही नहीं. Why to waste your time, isn't it? Okay, so just go for any teacher of your choice. उसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको. Okay, go for any teacher of your choice, but go for specialists of CMA. If you're studying CMA, go for CMA. Okay, you're doing CS, okay, go for classes which have been done for CS. ठीक है, अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हो, दैट्स ओके. ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर क्लासेस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, देन गो फॉर पीपल हु आर डूइंग फॉर योर कोर्स. ठीक है, ये हर कोर्स में कुछ सटल डिफरेंसेस रहते हैं. ऑल कोर्सेस हैव डिफरेंसेस, लाइक इन ऑडिटिंग आई टोल्ड यू, राइट? So in CA it is 100 marks, here it is 50 marks. So it doesn't make sense for you, you'll waste your time if you see CA material. Okay, चलो तो आगे. So done by an independent qualified person. एक मिनट कहाँ थे हम? Okay, sorry. ठीक है, this is where we were, right? So I went up because I went to the right side explaining, right? ठीक है, चलिए. So nature of auditing ये हो गया हमारा, right? So he क्या करता है? He obtains internal evidence. हमने क्या देखा? He obtains internal evidence. ठीक है, it is vouchers, records. Then relevant systems है, internal checks, internal control system देखता है. That's what I had explained you. Okay, then he gets external evidence also. ठीक है, external evidence means he is getting receipt from an outside organization or is getting data from outside organization. That's called external evidence. For example, bank balance is getting an advice from the bank. Okay, that becomes an external evidence. Okay, so sometimes he does physical counts. So he'll get a count of the stock or something like that. Okay, sometimes he has to get expert opinion. Okay, so he might need a legal opinion sometimes. So he'll go to a lawyer, right? So that is an expert opinion, right?
So he has to review compliance with law, costing records, operations and performances. ठीक है, बोल रहा may also. तो ये डिपेंड करता है आपका उसका जो स्कोप है, किस चीज का ऑडिटिंग कर रहा है उसके ऊपर. ओके ओके, अगर वो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, so he will mostly not go to cost records operations. Okay, ये सब के पीछे he will not go. Okay, so operations audit is separate, where you see whether efficiency is there or not and all that. Okay, the entire operations. Okay, yeah, generally, so what he will do is he'll do financial audit, okay, using the identified financial reporting framework, and he also has to see law. These two things he will see. ठीक है, ये दोनों को साथ में लेके normally वो चलेगा. Okay, so in different cases for different auditings, he will review compliance with law, costing records, operations and performance. ठीक है. Okay, चलो. So now next part is how ICA has defined auditing. ये हमने पहले भी देखा था. Okay, we had seen this earlier. So now we'll just we're going little bit into definition जो है, how the definition has been enlarged. Okay, so यहाँ पे earlier the audit definition was strictly relating to financial books of accounts. ठीक है, to see that the books of accounts and your financial statements, they are tallying and both together are giving a true and fair view of the state of affairs. Okay, so this is what was general, but यहाँ पे क्या ICAI का definition है, this CA Institute. Okay, a systematic and independent examination of, ठीक है, क्या data, statements, records, operations and performances. Performances में financial or otherwise, यानी it can be your profit, उसका audit of that performance, or it can be non-financial also. ठीक है, so of an enterprise for a stated purpose. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे ना. अगर ये वाले जो अभी मैंने बताया, डेटा ओके, ठीक है, comes under our old this thing. Statements it comes, okay, records it comes, ठीक है ना. operations, सारा operation कैसा अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, like is it efficient or not and all that, that is not a part of your old definition of auditing. ठीक है, operations and performances again, ठीक है, that is not part of the old. कि कम प्रॉफिट ले रहा है क्या, और ज्यादा ले सकता है क्या, that is not scope of auditing. Scope of financial audit as per the old basis. ठीक है, so now देखिए नया क्या include हो गया है. You can just see operations, performances. ठीक है, these things have been added now. Okay, so audit के definition में now it is not just that financial audit. Okay, उसमें इसीलिए सब आ गए हैं. Cost audit आ गया है, your proprietary audit आ गया, efficiency audit आ गया. All these things we'll see जैसे जैसे आगे जाएंगे. Okay, there are many other things which have come. Okay? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका प्रॉफिट से लेना देना भी नहीं है. Even audit of that happens. Okay, so now in any auditing situation, what does auditor do? He perceives and recognizes the propositions before him. ठीक है, तो वो बोलता है कि वो देखता है कि चलो हाँ, सबसे पहले वो ऑडिटिंग जब मिल रहा है उसको, तो जस्ट सी कि मेरे सामने क्या है, व्हाट एम आई डीलिंग विद, इज दिस वेरी गुड कंपनी विद गुड स्ट्रक्चर, गुड इंटरनल कंट्रोल्स, और इज इट shabbily managed company. Okay, all those things he'll see. He will collect evidence. ठीक है, he'll collect evidence. This is धीरे धीरे जाएगा. He'll speak to people, he'll get some receipt, something. Okay, collects evidence, he'll evaluate the evidence, ठीक है, and then he'll formulate the judgment, just communicated through his audit report. Okay, so this is a part of your CA's definitions. यहाँ पे मेन हमको क्या देखना है, it does not confine auditing to accounting records only. ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे operations, performances also have come. It doesn't confine to accounting records anymore. ठीक है, so now ये Ahrens, Elder and Beasley का
एक छोटा सा एक पॉइंट हमको देखना है आपके इसमें. सो we'll just see one small thing in this. इनका जो डेफिनेशन है, ओके, सो ये इसका डेफिनेशन नहीं लिखा मैंने. यू डोंट नीड ऑल इन्वर्टेड में पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सारे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको. बस एक 2 या 3 इंपॉर्टेंट है. वन इज दैट सी इंस्टीट्यूट वन, और ऊपर मैंने एक पहले बताया था आपको, है ना, तो मॉन्टगोमर्ली का एक, और हो सके तो डिपोलो का एक, और एनी वन विच यू लाइक. ठीक है, ऐसे इतना इनफ है. दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू. नाउ एरेंस, एल्डर एंड बीस्टली इन्होंने क्या बोले हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट नीड नॉट नेसेसरली बी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. है ना, सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही हो जरूरी नहीं. इट नीड नॉट नेसेसरली बी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बट वेरीफाइबल फॉर्म में होना चाहिए ना. मैं वेरीफाई कर सकूं कि इसमें ये लिखा है. ठीक है, इसको मैं और किसी के साथ कंपेयर कर सकूं कोई स्टैंडर्ड के साथ. अच्छा, इसमें ये है. ठीक है, और ये सेकंड वाला सपोज मेरा स्टैंडर्ड है, तो मैंने इसका ये वाला इंफॉर्मेशन देखा, आई कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, ओके दिस इज फाइन. ये लिया, ऐसे कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, ओके इट्स फाइन. ओके, सो इसको बोलते हैं वेरीफाइबल फॉर्म. यू आर एबल टू वेरीफाई इट. डेटा ऐसा गूंथ के ऐसा रख दिया है कि मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ कि डेटा को ऐसा बना दिया है. सपोज इन्होंने, मान लीजिए डेटा इज इन दिस. ठीक है, something, some part is here, some part is there. Okay, some is here, some is there, and one part is mixed like this, suppose, है ना. तो अगर मेरे को इसको वेरीफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, राइट. सो basically I won't be able to verify it. So only requirement is information, maintain it such that it is in verifiable form. Okay, लेकिन it need not necessarily be accounting information. ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको, ओके, ईयर इटसेल्फ हमको ये अभी डब्ल्यू हमको समझ में आ गया. लाइक आईसीआई इंस्टीट्यूट सेड, एरेंस, एल्डर एंड बीस्ली आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग. सेइंग इट कैन बी, ऑडिटिंग कैन बी ऑफ इंफॉर्मेशन अदर देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वो ये बोल रहे हैं. ओके, देयर शुड, यहाँ पे सेकंड थिंग है, व्हेन वी आर सेइंग दैट शुड बी इन वेरीफाइबल फॉर्म. ओके, it means there should be standards or criteria, okay, for evaluation of the information. ठीक, किसी चीज के साथ ही हम उसको ये कर सकते हैं. Last thing what they have said is, third point, auditor should be a competent person. Okay, he should be competent, उसको अपना काम अच्छे से आना चाहिए. He should be a competent person and he should have an independent mental attitude. ये क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में ऑडिटिंग के पहले से ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस कंपनी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगा. I will not say anything against this company. Okay, anything like that. So that is called prejudicial. Prejudicial है ना, आप किसी के बारे में आपका influenced opinion है. That should not be there. You should have an independent attitude. देखो जो दिख रहा है उसके बेसिस में form an opinion. Okay, go see whatever you see, based on that you form an opinion. Okay, ठीक है. So hence, ठीक है, तो ये हो गया आपका एरेंस, एल्डर एंड बीस्ली. सो मैंने नाम इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया. कभी कभी sometimes, you know, these names come in your objective types just to, you have to match something with something, and this name comes. So only thing is, आपको अगर ये मालूम होगा, ये नाम एक बार पढ़े होंगे, then it helps. So that's why I've just put the name. ठीक है, नहीं तो मैं normally if you see I will जो है काफी जो अनइम्पोर्टेंट चीजें आई रिमूव इट. ठीक है, आपको थोड़ा whatever notes I would be giving, it will be in a simplified form. ठीक है, so Ahrens, Elder and Beasley, they have said 3 things. One is information under audit need not be accounting information. That's one thing, but there should be standards or criteria for evaluation. Should be comparable with something. Auditor should be competent person and he should have an independent mental attitude. This is the things they have said. ठीक है, so now, so इसका क्या, so we are just summarizing this. That means auditing is not a process of mechanical comparison
ऑफ आइटम्स और टिकिंग ऑफ एंट्रीज है ना। ऑडिटिंग ये नहीं है कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ कि यहाँ पे ये क्या है, saying this, okay, this is fine. तो यहाँ पे is it this, is it, yeah, it is there. Just जा रहा हूँ बस, I'm only just seeing whether this is there, this is there, और मैं बस कंपेयर करते जा रहा हूँ कि ओके, इट इज नॉट दैट, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल कंपैरिजन, ओके, बट ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। इस क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको एविडेंस मिल रहा है, यानी वन एविडेंस इज यू हैव चेक्ड द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। एक चीज, एक क्या वे हो सकता है, आपने खुद ही अपना कोई यू हैव सेंट डेटा, ठीक है। तुमने बोला कि ठीक है मैं 50 रुपए में जमा कराता हूँ, आप कराइए, ओके, you have said to the first person, okay, so that person has taken your 50 rupees and he has, and your money has gone through the system. That way you tried and you found out how is the trail going, okay, and you found out that it is easy for you yourself to locate it. That means if there is an employee of the organization, he can easily locate it. So there you have got one evidence that the internal control is not good, ठीक है। इस तरह से he'll get evidence and he'll critically evaluate evidence, ठीक है। So auditing is analytical, critical and investigative. ऐसा नहीं है बस इसने यहाँ पे लिख दिया तो हाँ ये यहाँ पे लिखा है, मैंने बोला yes I've ticked it, everything is fine now, ये नहीं है। He has written, यहाँ पे इससे आगे मैं जाऊंगा, I'll go ahead, I'll go behind and see whether for this transaction is there a voucher, okay, and whether that voucher had been properly recorded in the books of accounts or not. All those things I'll go and see, okay. Hence it is not a process of mechanical ticking, ठीक है। So इसीलिए ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग का रिलेशन, ऑल्दो ऑडिटिंग इज चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, करेक्ट। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, व्हाट इज ऑडिटिंग, checking of books of accounts. So, but its principal roots are not in accounting, but in logic, ठीक है। So, जो वो काम कर रहा है क्या, checking of accounts, but उसका what is the first source of relevance for audit, okay, that is logic. वो logic यूज करके ये देख रहा है कि ये ठीक से हुआ है कि नहीं है काम करके, okay. So more than accounting, its relation is with logic. That's the point they are making here, ठीक है। तो छोटी मोटी चीजें, बट ये कुछ भी आपको पूछा जा सकता है इसमें से, okay. The course itself is not too large, so basically anything can be asked from your study material. So end audit में सब बनने के बाद क्या होता है, एंड में आपको क्या मिलता है, ऑडिट रिपोर्ट मिलता है, okay. So audit report is the end product of auditing, right, ठीक है। Extent of examination, whether it is going to be detailed examination or sample check, all these things हम देखेंगे आगे चल के, सभी मैं only आपको टच कर रहा हूँ कि ये चीजें हैं, okay. So the extent of examination, how detailed the examination would be, okay, and what would be the precise steps, क्या क्या step आप use करोगे auditing में, that depends on each case, ठीक है, it depends on your client, okay. So if you're doing an audit of bank, the structure is totally different. If you're doing audit of, say, a supermarket, then structure will be totally different, okay. So yeah. Next point, what we are going to talk is scope of auditing, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, अगला scope of auditing, ये भी important है, ठीक है। Scope of auditing पूछा जाता है कई बार, okay. स्कोप का मतलब क्या होता है इन जनरल, अगर मैंने बोला कि स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब ये होता है कि आपके दायरे में क्या आता है, स्कोप मींस आपके दायरे में। सो इफ यू आर सेइंग यू आर ऑडिटिंग एंड दिस इज योर स्कोप, ठीक है, यानी यू विल बेसिकली डील विद इंफॉर्मेशन विद इन दिस ब्लॉक। इफ देयर इज इंफॉर्मेशन हियर, सम इंफॉर्मेशन हियर, सो दैट इज आउटसाइड योर स्कोप, ठीक है। तो वी आर सेइंग व्हाट इज द स्कोप, दायरा क्या है ऑडिटिंग का, ठीक है, ओके, व्हाट ऑल विल इट चेक, ठीक है, ओके। सो श्लॉसर, स्लॉशर का भी एक डेफिनेशन है आपको, जैसे आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट, जैसे मैंने बोला यू डोंट नीड
टू मेनी डेफिनेशंस, पूरा इन्वर्टेड पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो डोंट गो फॉर इट. बट एक श्लॉसर के डेफिनेशन में दिस वन थिंग. ओके, सो ही है, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, he had extended purpose of auditing to मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स. यानी उन्होंने ये बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ऑल दोस थिंग्स, वो सब चीजें बोला है उन्होंने. ओके, so which is normally there in auditing. Then in the end he has just added these two words, मैनेजमेंट पॉलिसीज और स्टेटेड रिक्वायरमेंट. स्टेटेड रिक्वायरमेंट है जो और कुछ बोला गया है, तो that means this again increases the scope of auditing. ठीक है, so audit is just not जैसे हमने पहले देखा था, we had seen before that it is not related only to accounting information. Okay, so again here इसमें भी ये बात बताई गई है. ठीक है, the definition covers not only financial audit but also covers cost audit, internal audit, government audit, management audit, operational audit. Okay, क्योंकि यहाँ पे stated requirements बोल दिया. So जो audit, जो client ने तुमको जो task बोला है वो. ठीक है, this has really enlarged the scope of auditing. ठीक है, और नेक्स्ट एक पॉइंट ये है कि ऑडिटर जब अपना काम करता है, when auditor is doing auditing, okay, there is something which is beyond the scope of his competence. यानी say there is something now, एक चीज आ गया है कि he needs to know, now he wants to know whether ये जो काम है it is legally correct or not. What they have done is legally correct or not. He is not a legal expert. Okay, so that means वो उसके scope of competence से बाहर है. ठीक है, ऐसा चीज होने से क्या करना चाहिए? He is not supposed to perform such duties. ठीक है, which is beyond the scope. तो वो खुद जाके वो लॉ का बुक लेके उसको चेक करना नहीं है कि whether it is within the scope or not, माने ये काम ठीक है कि नहीं करके. ओके, it is beyond the scope of his competence. Okay, ठीक है, तब क्या करना चाहिए? और उसने he must exercise due diligence and professional care. This is not related to the former part. Due diligence and professional care, ना ध्यान रखना चाहिए क्या है क्या नहीं है. So actually when this kind of things come which is important but beyond his competence, then he can seek an expert's opinion. ठीक है, okay. If the auditor is not able to express an unqualified opinion, he must express a qualified opinion or disclaimer or opinion and state the reasons for it. ठीक है, so ये सब audit का जो final result आता है, when you get the final result of auditing, okay, then you have certain opinions which the auditor can mention, okay, in his report. तो ये होगा फाइनल रिपोर्ट की बात हो रही है. ओके, so when we are talking about an unqualified opinion, unqualified means he's saying, okay, I'm happy with whatever I have seen, everything is perfect. Okay, so I'm ready to say that whatever I'm saying that financial statements are actually giving a true and fair view of the state of affairs of the concern. Okay, and everything whatever I saw, there was nothing suspicious or anything, it was all well structured. ठीक है, ये बोल दिया, सब सही है बोल दिया, that is called unqualified. ओके, ठीक है. और एक होता है एडवर्स ओपिनियन, वो अनक्वालिफाइड का उस तरफ, इट्स अपोजिट डायरेक्शन. इससे कि नहीं, नो नो नो, देयर इज सम प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऑल दिस थिंग इज सेइंग दैट नो, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई हैव सीन. ठीक है, वो क्या हो गया? एडवर्स ओपिनियन बोलेंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन. ठीक है, अब ये दोनों के बीच में ये दोनों आ जाते हैं. ये क्या है? These two things come in between. One is qualified opinion. ठीक है, another one is disclaimer of opinion. ठीक है, so qualified opinion में क्या होता है कि qualified opinion समझा रहा हूं आपको. ओके, in qualified opinion say you have audited this whole area. Okay,
you have audited, okay, this whole area suppose, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस का एरिया है ये, ओके, एंड यू हैव ऑडिटेड एवरीथिंग, एक 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 पार्ट करके आप गए, you were happy with everything, but there was one area where that person was on leave, okay, or something that he was not available at all. You tried getting in touch, but he was not available. So this small yellow part जो है, you were not able to get in touch with that person to give proper opinion this way or that, ठीक है, उससे आपकी बात ही नहीं हो पाई, okay. So and all the other things are fine for you. So ऐसे केस में what you will do is you'll give a qualified opinion. तो qualified opinion का मतलब है you will say, in other words, आप बोल रहे हो कि ये जो येलो पार्ट है, ये ब्लॉक, apart from this everything else is fine. I'm certifying that apart from this yellow block everything else is fine. And in इस येलो ब्लॉक के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं. I have neither a positive nor a negative opinion because I have not been able to meet that person. Okay, so this becomes your qualified opinion. ठीक है. अब disclaimer of opinion जो है, qualified opinion को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो disclaimer होता है. Okay, disclaimer of opinion is also not adverse opinion. So now whatever I've told you here, ठीक है, क्या हुआ था कि इस ब्लॉक को you couldn't audit. Now say there are more such blocks. एक और ब्लॉक है यहाँ पे, I couldn't meet this that person, ठीक है, एक और ब्लॉक है यहाँ पे, I couldn't meet that person, ठीक है, and here there is one more block I couldn't meet, whatever. For this reason, now these four small blocks that I have not been able to audit, ठीक है. तो अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दूं? आधे लोग तो मेरे को मिले ही नहीं, ठीक है, half of the people I have not been able to meet them. So now what is the logic of saying that apart from this rest is fine? So in that case I will say that I am not giving any opinion, either positive or negative. I have not got enough data to form an opinion. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ I have not got enough data to form an opinion. So इस केस में ना you will give a disclaimer of opinion, which means you will say I couldn't form an opinion. तो ये आपके 4 मेन टाइप्स के ओपिनियंस होते हैं ऑडिट के. ओके, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ओपिनियंस, ठीक है. चलो, सो हियर नेक्स्ट इज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. सो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला पार्ट. ओके, सो थैंक यू, सो विल मीट सून.